So in the last lecture, we were discussing about Van 't Hoff factor. If you observe all the colligative properties are directly proportional to the number of moles of the solute. Or I can also say they are inversely proportional to the molecular weight of the solute. More is the molecular weight, lesser will be the value of colligative property. So whenever you have polymers, for the measurement of molecular weight of the polymers, we usually use osmotic pressure, which will be of some significant value. And if we are trying to measure any molecule's molecular weight, which is of medium molar mass, we usually use delta Tb and delta Tf. In Van 't Hoff factor, what we are trying to see is what are the total number of solute particles which we are obtaining whenever you are dissolving some electrolyte. और जो colligative property है, it is dependent only on the number of solute particles, but not on the nature of the solute particles. Or else I can say it is directly proportional to the number of the solute particles. So whenever there is an electrolyte, it will be dissociating into ions. Because of the dissociation into ions, the number of particles in the system will be increased. If the number of particles in the system is increased, the colligative property also will increase because it is directly proportional to the number of particles. In case of non-electrolyte, कुछ दिक्कत नहीं आएगा because that particular substance won't be dissociating or associating. If the substance is dissociating or associating, we need to see for the net number of particles that are left at the end of association or dissociation. Based on the number of particles only, we will get some change in the property. Okay, because colligative property का definition ही वो है that depends on the number of particles, but not on the nature of the particles. So we defined something like colligative property initial and colligative property final. Colligative property initial का मतलब क्या है? जो हम particles मिलाते हैं उसके हिसाब से जो भी हम calculation करेंगे. Colligative property final का मतलब क्या है? Particles मिलाने के बाद ending में total particles कितना है? Association या dissociation होने के बाद system के अंदर particles कितना है? So जो भी colligative property change आएगा, it depends upon the final particles. This is according to theory. This is actual value we get. Okay. So we are defining Van 't Hoff factor I as colligative property final divided by colligative property initial. Final का मतलब क्या है? It is the observed or the actual change. Initial का मतलब that we are calculating according to the theory or according to the number of particles which you are putting in. Okay. So from that we derived colligative property actual is nothing but I into calculated. Calculated के लिए हमारे पास delta TB के लिए formula I into delta TB is Kb into molality. Delta TF actual is I into Kf into molality. RLVP is I into mole fraction of solute. Pi is I into CRT. Okay, where as we are saying I is colligative property final upon colligative property initial, and we also know colligative property final depends upon final number of moles. Colligative property initial depends upon the initial number of moles. I can say I is equals to n final upon I, n initial. यहाँ तक clear है? So we will see different cases of how to get the value of I. Case 1. Let us consider first association of solute particles. Association of solute particles. Association में example, whenever there is polymerization, general के लेते हैं. पहले I am taking a polymer which is made of only 2 monomer units. 2A is combining to form A2.
और in general polymerization के लिए I can write Na combines to form An. Clear है? हाँ. पहले 2A converting into A2 उस एग्जाम्पल को लेके करते हैं, उसके बाद Na converting into An करते हैं. 2A converting into A2. Suppose initial number of molecules or initial number of moles भी मान सकते हो. Initial number of moles I am taking it as 20. If there is 100% polymerization, all of the A will be converting into A2. So the final A2 formed will be कितना होगा? 2 से एक A2 बन रहे तो 20 से कितना बनेंगे? 10. So in this case, what will be the value of I? What is I? N final upon N initial, which is equal to final moles कितना है सिस्टम के अंदर 10. Initial कितना लिया है 20. So कितना हो गया? Half. Okay. So whenever there is association, the value of I will be less than 1 because number of molecules are getting decreased. Number of molecules will be increased whenever there is dissociation. In that case, I will be greater than 1. Okay. ठीक है. अभी मान लेते हैं इस पे केस में 100% एसोसिएशन हुआ. Suppose if there is no 100% association. Okay. Initial amount 20 है. Reacted amount, which we usually denote it by R na. Reacted are only 10. Okay. If 10 are reacted, how many moles of A2 will be formed? 5. 5. So A2 formed is plus 5. So final amounts कितना होगा? इसका 10 होगा, बचेगा, और इसका 5. In this case, what is the value of I? What is the value of I? 1/4. No. It is, and final is system के अंदर moles कितना है? A का moles भी है आप लोग को, A2 का moles भी है. So total moles कितना हो गया? 15. 3 Okay. Upon 20. Total final moles divided by total initial moles, which is equal to 3/4. Don't say it as 5 divided by 20. It is 5 plus 10 divided by 20. है कि नहीं? Okay. In this case, can you define degree of dissociation or degree of association alpha? Because it is not associating to 100%. So if I want to define degree of association मतलब क्या हो जाएगा? Number of molecules associated divided by number of molecules taken. बोल सकता हूँ? हाँ सर. Moles associated upon moles taken. Moles associated कितना हुआ? 10. Moles taken कितना है? 20, which is equal to 0.5. इस केस में degree of association alpha is 0.5. Okay. So let us try to derive a general formula for the polymerization Na converting into An with general degree of association alpha. Okay. Everyone, please try to participate. Initial moles I am taking are Ni. If the degree of association is alpha, what are the moles associated? A alpha नहीं, Ni लिया मैंने, गौरी. Okay. Ni alpha? Everyone. Because degree of association is moles associated by moles taken. Moles taken are Ni. So moles associated will be Ni times degree of dissociation. Sorry, degree of association. Ni into alpha. Okay. So यहाँ पे minus Ni alpha put करूँ. What are the moles of An formed?
What are the moles of AN formed? Ni alpha by N. N. Na alpha upon N. जिनको कंफ्यूजन है, N मोल से 1 मोल बन रहे, Na alpha मोल से कितना बनेगा? It is nothing but Na alpha unitary method upon N into 1. Okay, so the formed AN are Ni alpha upon N. What will be the final moles? Ni into 1 minus alpha. Ni minus Ni alpha or Ni into 1 minus alpha. ये वाला Ni alpha upon N. What are the total final moles in the system? N final equals to Ni minus Ni alpha plus Ni alpha upon N. Can I take Ni common? N final is equals to Ni into 1 minus alpha plus alpha upon N. From this I can write N final upon N initial is equals to 1 minus alpha plus alpha upon N. ये जो वैल्यू है N final upon N initial, what is that equal to? Vector factor. I. Vent of factor I. Very good. So I क्या हो गया? I is equals to 1 plus alpha into 1 by N minus 1. Is this right? Okay. Was this is the formula for the association. They will be giving you the degree of association. I calculate करने के लिए directly formula use करेंगे. 1 plus alpha into 1 by N minus 1. इसी में if alpha equals to 1, मतलब 100% association हो रहा है, what will be the value of I? I 1 by N हो जाएगा, है कि नहीं? देखो इसमें ऑब्जर्व करो, स्टार्टिंग केस में when alpha is equals to 1, 100% होने के बाद I का वैल्यू क्या होगा? 1/2. 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे तो 1/2, 3 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे तो 1/3, 4 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे तो 1/4. वो लॉजिक याद रखो, डायरेक्टली कर सकते हो, जल्दी जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन. ओके, ठीक है. एग्जांपल, benzoic acid in benzene. ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, इन जनरल all carboxylic acids of lower molecular weight, all carboxylic acids of lower molecular weight show dimerization in vapor state. ये याद रखना है पॉइंट, in vapor state and in a non-polar solvent. Benzene is a non-polar solvent. Okay, so whenever you take benzoic acid, what is the formula for benzoic acid? C6H5COH. So because of hydrogen bonding,
It shows dimerization. Okay, clear? So इस रीजन के वजह से the number of solute particles in the system will be decreased. जितना हम सोचते हैं रहना चाहिए उतना नहीं रहेगा because of the dimerization. Whenever these molecules move inside the system, they will be moving as a single entity. Okay. Case 2, when there is dissociation of solute particles. जैसे एसोसिएशन में हमने फॉलो किया वैसे ही फॉलो करते हैं बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ A2 उसका उल्टा कन्वर्टिंग इनटू 2A. इनिशियली मान लेते हैं अगेन लेट अस टेक 20. if the degree of dissociation is 100%, minus 20 होगा. What will be the amount of A formed? 40. Plus 40. So the final amount in this case is 0 and 40. So if I want to calculate I, which is n initial upon, sorry, n which is n final upon n initial. n final कितना है? 40. Initial is 20. So what is the value of I? It is 2, which is greater than 1. Okay. दूसरा केस में इनिशियल ले रहा हूं मैं अगेन 20, but reacted are only 10. What will be the A formed? 20. Plus 20. What are the final number of A2 left? 30. 10. A2 left are 10 and A formed are 20. So N final is 30. Okay. N final upon N initial कितना होगा? 30 upon 10. Sorry, 30 upon 20, which is equal to 1.5. Right? Again, let us take a general case. AN converting into Na with degree of dissociation alpha. अब बताओ आप लोग. Initially, I'm taking Ni moles. So reacted कितना होगा? Ni alpha. It is minus Ni alpha. Formed A कितना होगा? N into Ni alpha. 9 to alpha. Very good. Plus N into Ni alpha. So final कितना होगा इसका? Ni minus Ni alpha इसका N into Ni alpha. So total number of final moles बताओ. N final is equals to Ni minus Ni alpha plus N into Ni alpha. So N final equals to Ni common लिया तो 1 minus alpha plus N alpha. What is N final upon Ni equal to? It is 1 minus alpha plus N alpha, which is equals to I. I. Okay. So I in this case equal to 1 plus alpha times N minus 1. दोनों फॉर्मूलाज को भी याद रखना आसान है. The first formula says 1 plus alpha into 1 by n minus 1. The second formula says 1 plus alpha into n minus 1. Easy?
Okay, again, if alpha is equals to 1, I will be equals to n. Okay, जितना molecules बन सकता है, जितना ions बन सकता है, that is equals to the value of n. I hope this is clear. और एक बात करते हैं यहाँ पे. We know that colligative property is inversely proportional to molecular weight. Okay, so if I write Cp final upon Cp initial, what will this be equal to? This is molecular weight initial divided by Molecular weight final. molecular weight final. ये molecular weight initial क्या होता है? This is nothing but the actual molecular weight ना, without any dissociation or association. मतलब जो पार्टिकल को वैसा ही मिला रहा हूँ, मतलब जो इनिशियल पार्टिकल इनिशियल मॉलिक्यूल रहता है उसका मॉलिक्यूलर वेट, राइट? So this is the, in this case this is the actual molecular weight. Actual colligative property Cp final है, वो अलग है. Okay, don't confuse between, मतलब मैं इनिशियल के केस में यहाँ पे एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट लिख रहा हूँ. समझ में आ रहे हैं ना? यहाँ पे इनिशियल के केस में सीपी इनिशियल का मतलब क्या करते थे? कैलकुलेटेड करके लिखते थे. CPF is the actual thing. बट मॉलिक्यूलर वेट के केस में उल्टा होगा, क्योंकि विदाउट डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो भी मॉलिक्यूलर वेट रहता है, दैट इज द एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस. Because of the dissociation or association, it is getting some abnormal molecular weight. Is this clear? हाँ. ये सारा colligative properties हम किसके लिए यूज करते हैं? In order to find the molecular weight of the unknown substance, right? अगर वो डिसोशिएट और एसोसिएट हो रहे तो जो भी मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड करेंगे, दैट इज नॉट द एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट. आई होप दिस इज क्लियर. दैट विल बी सम एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. और क्योंकि 100% डिसोसिएशन 100% एसोसिएशन नहीं हुआ तो कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होगा, कुछ नहीं हो रहे. सो जो भी मॉलिक्यूलर वेट आ रहे हैं हमको, दैट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट थिंकिंग ऑफ सम अदर सब्सटेंस. ओके, I hope this is clear. Molecular weight initial क्या होता है? This is the actual molecular weight. M final मतलब I'm writing this as abnormal molecular weight because of dissociation or association. Can I write that? Let us solve some questions. आपको क्लियर आएगा. Okay. Solve this question. Depression and freezing point of water observed for the same amount of CH3COOH, CCl3COOH, CF3COOH
in the order given above. Explain. Depression freezing point of water observed for the same amount of CS3COH, CCl3, same amount of matlab same number of moles. Okay, the amount it gets moles increases in the order CS3COH, CCl3COH, CF3COH. What is the reason for this? Tell me. डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा? मतलब वो जो डिप्रेशन है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा? When I is greater. When I is greater, I greater नहीं, when the number of moles of particles are greater. Okay, I सबका सेम हो सकता है, I सबका सेम नहीं, sorry, it in a way depends upon alpha ना. Rather than talking about I, talk about alpha. If alpha is greater, obviously I will be greater. सही है रुचिता, तुमने जो कहा है सही है, when I is greater, सही है, वो स्टेटमेंट सही है. But rather than comparing directly I, in order to compare I, we need to get the value of alpha. So more is the value of alpha, more will be the value of I. बोल सकता हूँ मैं? Okay. ठीक है. So इस particular case में, after dissociation, for these acids, what are the number of particles which we obtain? CH3COH dissociate क्या कैसे होगा? It is CH3CO minus plus H positive. CCl3COH कैसे dissociate होगा? CCl3CO minus plus H positive. CH3CO minus plus H positive. तो ये जो molecules है dissociate होने के बाद particles कितना बना रहा है? 2 ना? सबके लिए same ही है. Okay. All of these are organic acids. Are organic acids strong acids or weak acids? Weak acids. Weak acid. Weak acids, so they won't be dissociating to 100%. So जिनका अल्फा ज्यादा रहेगा उनका पार्टिकल्स ज्यादा आएंगे. More number of particles in the system, greater will be the depression, the freezing point. Can I say that? So compare the acidic strength order. What is the order of acidic strength in these three cases? CF3 greater Electron than 6. withdrawing groups. Yeah, electron withdrawing groups increases acidic strength. If this is the order of acidic strength, what is the order of their acid dissociation constant? K1 is greater than K2 is greater than K3. Okay, इसके लिए K1 मान रहा हूं मैं, इसके लिए K2 मान रहा हूं, इसके लिए K3 मान रहा हूं. Okay, and what is alpha equals to, according to ionic equilibrium, what is alpha for a weak acid? Alpha is equals to root over K upon C. Okay, this is for very dilute solutions. Very dilute solutions, alpha is equals to root K upon C. So for the same concentrations, जिनका K का वैल्यू ज्यादा रहेगा उसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा रहेगा. अगर अल्फा का वैल्यू ज्यादा है तो more and more particles will be formed. If more particles are formed, more will be, obviously more will be the value of I. If more is the value of I, greater will be the depression and freezing point. Is this clear? Okay.
एंड इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में हम ऐसा कुछ मान रहे हैं डेल्टा टीएफ जो है, ठीक है, कुछ नहीं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स केएफ इनटू मोलालिटी। जो केएफ है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट चेंज हुआ तो केएफ चेंज होगा, नहीं होगा वो। ओके, केएफ इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। Calculate the delta TF of water when 10 gram of CH3, CH2, CHCl, COH is added to 50 gram of H2O. Ka as dissociation constant दिया है 1.4 into 10 raised to minus 3. Kf दिया है आपको 1.86 केल्विन kg पर मोल। सबसे पहले आप लोग को अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा। Once you get alpha, find the value of I. इस केस में डिसोसिएशन हो रहा है, so yeah, I is 1 plus alpha into n minus 1. So once you get the value of I, find the value of delta TF. Excuse me. कैसे, what is the formula for alpha? और Ka is 1 point. C alpha square 1 minus alpha Ka. अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो अल्फा इज इक्वल्स टू रूट के सी होगा। इसके हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, अल्फा लेस देन 5% और अल्फा इज लेस देन 0.05, राइट। अगर आप लोग किसी ने कैलकुलेट किया क्या अल्फा यूजिंग रूट के अपॉन सी, 1.4 into 10 raised to minus 3 upon, सबसे पहले C का वैल्यू, what is C? Concentration, right? It is 10 grams divided by 122.5 आता है वॉल्यूम इन ml। 250 grams of H2O मतलब 250 everyone
250 grams of H2O. 250 gram equals to 250 ml हो गया. Okay. On dissolving grams of this, I'm assuming that there is no change in volume. Okay. वो assumption हमको लेना ही पड़ेगा. 250 into 10⁻³ liters हो जाएगा, which is equal to 40 upon 122.5. So if you substitute this, आपको actual में alpha आएगा 0.0695, which is greater than 5%. So you need to solve for alpha using C alpha square upon 1 minus alpha. Okay, but उससे भी solve करने से almost 0.06 नहीं आएगा, 0.07 या 0.68 ऐसा कुछ आएगा, ज़्यादा variation नहीं होता है. Okay, so we will go by taking this as alpha. If you are given the question in advanced, then you need to solve this using C alpha square upon 1 minus alpha. Mains में in general आया है तो directly cancel होकर 0.05 से कम आएगा value. Okay. And कितना है? Dissociate होकर 2 molecules में होता है, 2 particles. Value of phi then it is 1 plus alpha, which is equal to 1.0655. So what will be delta TF? It is I into KF into molality, I 1.0655 40 divided by 122.5 moles of solute upon mass of solvent K. Everyone, which is again equal to 40 upon 122 moles of solute. Mass of solvent in kg is 250 into 10⁻³ only, into 1.86, which is equal to 0.6456 degrees C. I hope this is clear. Method देखो आप लोग क्या कर रहा हूँ मैं, वो जो कैलकुलेशन है इतना लेंदी नहीं आएगा आपको फाइनल एग्जाम में. Just look for the method. In fact, आपको क्वेश्चन जो आएगा, they will be giving you the KA. You need to compare which will be having a greater depression in the freezing point. कैलकुलेशन भी मेंस में कैलकुलेशंस भी नहीं आएगा, बोर्ड्स में आप लोगों को कैलकुलेशंस करने का क्वेश्चन आएगा. मेंस में जस्ट यू नीड टू कंपेयर टू डिफरेंट सॉल्यूट्स. टू grams of C6H5COH. ये क्वेश्चन करो, इंटरेस्टिंग है. Dissolved in 25 grams of benzene produces a freezing point depression of 1.62 degrees C. Calculate the molecular weight. Kf equal to 4.9 Kelvin kg per mole. You need to calculate the molecular weight करके पूछा तो you need to calculate the abnormal molecular weight. Okay, मतलब इसी डेटा को लेके मैं जो भी 2 grams वो सब लेके
कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा दैट इज द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट. वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट. हाँ. ये जो 2 ग्राम्स डिसॉल्व करने से इतना फ्रीजिंग पॉइंट का मुझे वेरिएशन आया. सो नॉर्मल मैं कैलकुलेशन कर लिया तो द मॉलिक्यूलर वेट व्हिच वी ऑब्टेन इट इज द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट. वी वोंट बी इनकॉर्पोरेटिंग आई, क्योंकि इसमें आई का वैल्यू हमको पता भी नहीं है वो कितना डिसोशिएट हो रहे हैं कितना, क्योंकि के ए नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हमें. समझ में आ रहा है? So the molecular weight which we will be calculating is without accounting the association. Sorry, by accounting the association. Associate होने के बाद जो भी molecular weight आता है ना, वो value. So simply use delta TF is equals to KF into molality. Don't use the term I. समझ में आ रहा है? हाँ. ऐसा सोचो 2 grams of C6H5COH दिया है ना, don't think of that as C6H5COH. 2 grams of a substance is dissolved in 25 grams of benzene. Freezing point depression उतना दिया है. Find the molecular weight. क्वेश्चन ये है आप लोगों को. उसके लिए हम क्या करते थे? Directly we put the formula delta TF equals to KF into molality. Everyone help me with this. Delta TF कितना है? 1.62. KF कितना है? 4.9. Molality कितना होगा? 2 divided by molecular weight divided by 25 into 10 raised to minus 3. Please tell me the value of molecular weight. Everyone calculate and tell me. Two. 122. It is 122. 122 नहीं आना चाहिए. Molecular weight of C6H5COH is 122. This value is not 122. Calculate the molecular weight using this one, this relation. आंसर कैलकुलेट किया होगा किसी ने? $243. 243 और 243 या 241? हाँ वही उसके 241 से. It is 241.97. 241.97 आता है अगर आप लोग कैलकुलेट किया तो. What is the actual molecular weight of C6H5COH? 120. ये कितना है? 122 gram per mole, right? What is I? It is equal to, everyone, Cp final upon Cp initial, which is equal to A inversely proportional
molecular weight initial upon molecular weight final. Molecular weight initial matlab which is the actual molecular weight, which is 122 divided by 241.97. इसका वैल्यू जो है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.59. अगर पूरा 49 सॉरी, अगर पूरा एसोसिएट हो जाता तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट कितना आना चाहिए हमें? इफ देयर इज 100% एसोसिएशन, मॉलिक्यूलर वेट कितना आना चाहिए? 122 plus 122 which is equals to 244. हाँ. ओके, इसका मतलब क्या है? देयर इज नॉट 100% एसोसिएशन, यू आर हैविंग ओनली सम डिग्री ऑफ एसोसिएशन. वो भी कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग विद द हेल्प ऑफ आई. आई जो है 0.49 आया ना, आई इज इक्वल्स टू 1 plus alpha into 1 by n minus 1. So 0.49 equals to कितना आएगा? 1 plus alpha into what is the value of n? 1 by 2 minus 1. 0.49 equals to 1 minus alpha by 2. Alpha by 2 is equals to 0.51 आ रहा है क्या? हाँ. अल्फा कितना आया? 1.0. अल्फा कितना आया? 1.02. 1. अल्फा शुड बी लेस देन 1 ना. एक बार कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने? देखो, आई थिंक इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0.49 ना. 0.51 होना चाहिए. 122 अपॉन 241.97 कितना आता है? 0.50. हाँ, 0.504 है. मेरा कैलकुलेशन गलत है, इसलिए अल्फा ग्रेटर देन 100% आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल. 0.504 है. Zero four. So this is 0.496 होगा. हाँ. So this is 0.992. So alpha is not 100%, it is 99.2%. अगर 100% होता तो 244 आना चाहिए हमें, right? So they can also ask you the value of alpha from this. समझ में आ रहा है? हाँ. So वो भी कैलकुलेट करके दिखाया आपको. I hope this is clear. Why we are using the formula Kf into molality but not I into Kf into molality? हाँ सर. क्योंकि I का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, because they have already given you the actual depression freezing point, which is 1.62. उस एक्चुअल के हिसाब से वो जो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. We are not trying to calculate the actual molecular weight of the substance. Actual molecular weight तो हमें ऑलरेडी पता है. इस डिप्रेशन के हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए वो कैलकुलेट कर रहे हैं. I hope this is clear. Shall I go to the next question? हाँ.
ऑफ द फॉलोइंग, ये भी थियरेटिकल क्वेश्चन है, जल्दी कर सकते हैं आप लोग. ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलल aqueous solutions, which will exhibit largest delta TF, which will exhibit largest delta TF. A KCl, B C6 H12 O6, C K2SO4, D Al2 SO4 thrice, E NaCl, which will exhibit the largest delta TF. Answer? सबका concentration सेम है, 0.1 मोलल ये. Al2SO4 thrice. Al2SO4 thrice, because that will give you greatest number of particles. KCl, K2SO4, Al2SO4 thrice, and NaCl, ये सब strong electrolytes है. In case of strong electrolytes, 100% dissociation होगा, then what will be the value of I? It will be equal to the number of particles formed. I equal to n ना, इस केस में 2. इस केस में I जो होगा वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, so I will be equal to 1. इस केस में I will be equal to 3. इस केस में I will be equal to 5. इस केस में I will be equals to 2. So I can say सबसे ज्यादा D greater than C greater than A is equal to E greater than, और एक ऑप्शन भी ऐड करता हूं, आप लोग बताओ. F जो है CH3COH. In this case वो जो 100% डिसोशिएट नहीं होता है, so 1 less than, can I say I will be less than 2. 100% डिसोशिएट हुआ तो 2 आएगा, कुछ डिसोशिएट नहीं हुआ तो 1 आएगा. so इन दोनों के बीच में रहना पड़ेगा उसको. so A will be equal to E greater than F will be greater than B. Any doubt? नहीं. ओके. अभी आप लोग को एक छोटा सा कैलकुलेशन का रिजल्ट देता हूं, उसका इंटरप्रिटेशन आप लोग बताओ मुझे. ओके. मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड for NaCl. Molecular weight calculated for NaCl, it is given as 30 gram per mole. Using some colligative property, I have calculated the molecular weight of NaCl as 30 gram per mole. What can you interpret from this particular data? Should I? Okay, what is the value of I then? Greater than Greater than 1 तो होगा ही है, because NaCl है वो.
1 point. Will it be equal to 2? No. सबसे पहले ये देखो, मान लेते एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, मान लेते मैं केवल एक ही NaCl, I am dissolving only one NaCl in water. If it dissociates into Na positive plus Cl minus, what is the average molecular weight? Average molecular weight क्या होगा? NaCl का molecular weight कितना आता है? 58.5 ना? Average molecular weight is nothing but total mass upon total number of particles. कितना है? 2. Okay, this comes out to be, suppose मान लेते हैं 1 नहीं, 1 से 1 mole ले लेते हैं. If it dissociates into 1 mole of Na positive and 1 mole of Cl minus, average molecular weight कितना होगा? Total mass, which is 58.5 divided by total number of particles equals divided by 2 moles. कितना हो गया? Total mass is 58.5 grams. Total moles are 2 mole. कितना आया ये? This comes out to be 29.25 gram per mole. Okay, ये कब होगा? If all the particles are dissociating into ions. इससे ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? Some of the NaCl units are not breaking into Na positive and Cl minus. Is this clear? हाँ. So you are not having 100% dissociation. So इससे मैं पहले I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ. What is I? I is, यहाँ पे किया हमने, I is molecular weight initial, मतलब which is the actual molecular weight divided by molecular weight final. Molecular weight initial divided by molecular weight final. Initial कितना है? 58.5. Final कितना है? 30. This is equals to 1.95. So from this you can calculate the value of alpha. 1.95 is equals to 1 plus alpha into n minus 1. I is equals to 1 plus alpha into n minus 1. n का वैल्यू कितना है? Two. So 1.95 is equals to 1 plus alpha. Alpha is equals to 1.95 minus 1, which is equal to 0.95. So the alpha is not 100%. Okay, it is 95%. इसलिए हमको वो जो molecular weight है 29.25 के अलावा 30 आ रहा है. समझ में आया? हाँ. ये किस वजह से हुआ होगा? NaCl completely dissociate क्यों नहीं हुआ? Because the amount of water may be insufficient. Even though it is a strong electrolyte, you need to have sufficient water to dissolve it. If the amount of water is insufficient, some of the NaCl will be undissociated. I hope this is clear. हाँ. Alpha is not 100% as amount of water is insufficient. Okay. Clear? हाँ. Last question. 0.01 molar
aqueous solution of K3 FeCN6 freezer set minus 0.062 degrees C. What is the degree of dissociation? KF दिया है आपको 1.86 Kelvin kg per mole. They're asking you to find the value of alpha. पहले आई का वैल्यू कैलकुलेट करो, आ जाएगा आंसर. What is the formula for delta TF in this case? Delta TF is equals to I into KF into molality. Delta TF दिया है हमको freezer set minus 0.062 ना, तो delta TF कितना आया 0.062. KF is 1.86, molality is 0.01. Tell me the value of I. Anyone? I think 1.86 और 0.062 दोनों कैंसिल होगा ना. 0.62 into 3 times is 1.86. So एक 10 ऊपर रह जाएगा. It is 10/3. 10/3. You need to know, ये हम coordination compounds chapter में पढ़ेंगे. Our last chapter. K3FeCN6 जो है, it dissociates as 3K positive plus FeCN6 3 minus. Everyone in the lecture? Okay. So ये ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है, it won't be dissociating into ions. Only the part present outside of the square bracket, it will be dissociating into ions. So 3K positive plus FeCN6 3 minus. So total ions कितना है आपको? N equals to 4. Okay. I का फॉर्मूला क्या होगा? I equals to 1 plus alpha into N minus 1. I is 10/3 equals to 1 plus alpha into 4 minus 1. कितना है बताओ? 3 alpha equals to 10/3 minus 1, which is equal to 7/3. Alpha is 7/9. Okay, alpha is 7/9. I hope this is clear. There is last part left. 10 मिनट है, हो जाएगा.
This method is used for finding the relative lowering of vapor pressure experimentally. Oswald Walker process. हमको ये पता है relative lowering of vapor pressure equals to mole fraction of solute. Okay, but वो relative lowering of vapor pressure which is P naught minus PS upon P naught, उसका value जो है we will try to find that experimentally. If we are not given P naught PS, we need to find the value of P naught minus PS upon P naught na. Okay, so in order to do that, we will do an experiment to find the relative lowering of vapor pressure, which we will later equate that to mole fraction of solute. So this experiment is used for finding RLVP. Experimental setup देखते हैं पहले. Okay. Everyone concentrate. What is the purpose of this particular experiment? Determination of Relative lowering. Determination of RLVP. Okay. So in this particular part, I'm taking solution. Okay. And इस part में I am taking pure solvent. And इस section में I am taking some drying agent. This part or this section has solution. This section has pure solvent, and this is some drying agent. Okay, मैं क्या कर रहा हूं? I am passing dry air through this column. Whenever I am passing dry air, अभी सबसे पहले
सॉल्यूशन के ऊपर जो भी प्रेशर रहेगा इट विल बी इक्वल टू PS, नॉट इक्वल्स टू P नॉट, इट विल बी इक्वल टू PS. सो जब भी वो जो ड्राई एयर है इस पर्टिकुलर सेक्शन से पास होगा, कैन आई से द ड्राई एयर will be saturated at PS. मतलब वो ड्राई एयर के अंदर अभी जो वेपर्स आएगा वो वेपर सैचुरेट होके उसके अंदर वेपर्स का प्रेशर कितना रहेगा, इट विल बी इक्वल टू PS, राइट? ओके. whenever it is passing through this particular section, अभी एक बार इससे पहले इस सेक्शन में कॉन्सेंट्रेट करते हैं. because of formation of vapors from this particular solution, there will be loss of weight of this particular solution, क्योंकि उसके अंदर से वेपर्स बन रहे हैं ना. मान लेते हैं W1 जो है इट इज लॉस इन मास ऑफ solution. What is the W1 proportional to? और जो प्रेशर है उसके ऊपर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा अमाउंट इधर से एवापोरेट होगा. सो कैन आई से द लॉस इन मास W1 is proportional to vapor pressure of the solution. Okay, now that particular dry air which is containing vapors PS is passing through this particular section. Initially ये वाला पार्ट मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है, अभी ये ब्लॉकेज हटा दिया. now this is going through this particular part. सॉल्वेंट के ऊपर टोटल प्रेशर कितना रह सकता है? P नॉट. हाँ. सॉल्वेंट के ऊपर द टोटल प्रेशर विच यू कैन हैव इज P नॉट. बट ऑलरेडी और ड्राई एयर में प्रेशर कितना है? इट इज इक्वल्स टू PS. Dry air along with PS, right? Because it is saturated with the vapors. Now whenever it is going through this particular section, वो जो dry air है it will be saturated at P naught. Everyone please concentrate. W2 जो है मान लेते हैं that is loss in mass of solvent. वो कितना होगा? लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट. ऑलरेडी इस पर्टिकुलर ड्राई एयर के अंदर PS है, सो P नॉट अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर से नहीं आएगा. जितना उसके ऊपर रह सकता है, सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर कितना रह सकता है? इट कैन हैव अ प्रेशर ऑफ P नॉट. ऑलरेडी इफ इट इज हैविंग अ प्रेशर ऑफ PS अपॉन इट, व्हाट इज द वेट लॉस फ्रॉम द सॉल्वेंट? इट विल बी प्रोपोर्शनल टू, कैन आई से P नॉट माइनस PS? Is this clear everyone? If there is any doubt let me know. इस ड्राई एयर के अंदर ऑलरेडी PS वेपर्स के वजह से there is some pressure inside the dryer which is equal to PS. Now upon this surface the pressure it can have is P naught because it is pure solvent. If already some pressure PS exists, the vapors which can be formed from this solvent will be proportional to P naught minus PS. So the weight loss will be proportional to P naught minus PS. Is this clear? Whenever the air saturated by P naught amount, if it is passing through this drying agent, the moisture inside it will be absorbed by the drying agent. So if I take W3 as gain in mass
of the drying agent. What is W3? Gain in mass of agent. What is that proportional to? W3 will be proportional to, it has to be proportional to P naught, or else I can say W3 is equal to जितना weight loss सॉल्यूशन में हुआ और जितना weight loss सॉल्वेंट में हुआ वो दोनों को ऐड करके वही आएगा ना, or else I can say W3 is proportional to P naught. What is RLVP? Formula for RLVP? P naught minus PS upon P naught. P naught minus PS upon P naught. What can I write this formula equal to? P naught minus PS कितना है? W2 upon P naught is nothing but W3, or I can say it is W2 upon W1 plus W2. So ये readings हमको आएगा already. These readings will be obtained from this experimental setup. Once you get these readings, you can get RLVP, and finally you can equate this to mole fraction of solute. Is this clear? Any doubt? सर पूछो. वो पी नॉट माइनस पी एस का एक बार देखो इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर कितना हो सकता है, एग्जिस्ट हो सकता है. इट मस्ट बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन द प्रेशर ऑन दिस सरफेस इक्वल्स टू पी नॉट, राइट? देन इट विल बी इक्विलिब्रियम. हाँ Now because of these saturated vapors, this particular section already has the pressure of PS. So in order to have equilibrium, its pressure must go to P naught, right? So कितना और बढ़ना पड़ेगा? P naught minus PS बढ़ना पड़ेगा. हाँ हाँ Okay, so इसके अंदर से जो भी weight loss होगा, it is proportional to only P naught minus PS, because I am already exerting some pressure over this surface because of these saturated vapors. हाँ इसलिए P naught minus PS amount T बन रहा है, और इसका weight loss जो है it is proportional to P naught minus PS only. Clear? हाँ सर एक क्वेश्चन देता हूं आप लोग को होमवर्क के लिए. आप लोग करना. आई विल पोस्ट द नोट्स along with the solution. आप लोग कोशिश करो. Dry air was passed through a solution containing 20 gram of a substance in 100 gram of water, and then passed through pure water. The loss in mass of solution was 2.945 2.945 grams, and that of pure water
0.059 gram. Calculate molar mass of solute. Calculate molar mass of solute. Direct formula application है. वो जो W1 upon W1 plus W2 is nothing but, sorry, W2 upon W1 plus W2 is nothing but mole fraction of the solute, which is the RLPP. Okay, so solve this question. I will post the solution. Thank you. We will meet in the next lecture with a new chapter, electrochemistry. Okay. Oh.